लोगों को नमस्कार, धन्यवाद। यस मैडम। यस सर, मैंने बता दिया है आज वर्चुअल रिट्रीट का सब लोगों को। काफी लोग ज्वाइन भी हुए हैं, आज बता रहे थे उन लोग। ओके। यस सर। So what's happening in ज्ञान भारत? सर 5 डेज तो बहुत लिए पिरामिड एनर्जी के ऊपर। विजडम आशा गुप्ता जी ने दिया था और खूब अच्छा चल रहा है सर। Okay, good. So this session, as we discussed before, it's going to be an interactive session, a question answer session. So anybody wants to ask any questions or they want to ask any clarification on any topic, any subject in particular, so they may ask. Last week, I have presented about the 3 aspects and how to do service and what are the levels in service. So today it will be question answers. फ्रेंड्स, जिनको भी क्वेश्चंस पूछना है वो हैंड रेज कर ले। हाँ सुनंदा जी, या कोई भी टॉपिक पे आपको क्लियरिफिकेशन चाहिए तो वो भी पूछ सकते हैं आप। हाँ सुनंदा जी, अनम्यूट करिए। अनम्यूट करिए सुनंदा जी। हाँ नमस्ते मैम। नमस्ते। नमस्ते मैम। नमस्ते। हाँ, वो JTTP का वो सेशन किया है मेरे बहू ने, तो 21 दिन का किया है, तो उसको प्रकाश ही सामने दिखता है। उसको प्रकाश हटता ही नहीं है, ऐसे आंखें बंद किए तो प्रकाश ही प्रकाश दिखता है। तो वो बोलती है तो इसे क्या करना? कुछ नहीं है मैडम, वो एक्सपीरियंस है, बस एक्सपीरियंस को विटनेसिंग करना है, देखते रहना है बस। उससे ना अटैच होना है, ना उसके कोई एनालाइज करना है, कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ एक्सपीरियंस है वो। हाँ क्या? हाँ अच्छा। हाँ शीतल जी, हो गया मेरा? नहीं आप पूछिए ना, आप ऐसे वाले क्वेश्चन नहीं पूछिए, कुछ और पूछिए। अच्छा, तो वो बोली तो चलेगा क्या कल? हाँ, अगर किसी को शेयर करेगी तो। अच्छा, बहू को, मेरी बहू है ना। हाँ, तो उनको दिख रहा है तो वो किसी के साथ शेयर कर ले, बस हो गया, इतना ही है। अच्छा ओके, है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है कि उसके बारे में बहुत चर्चा की जाए। अच्छा ठीक है, ओके मैम। हाँ शीतल जी। Sir, last time, good evening, sir. Sir, last time you said about 3 types of karma: good karma, bad karma, and one more karma. I just want to relate this with an example and ask you a doubt. Sir, I want to ask in our profession, like I'm a gynecologist. Many of the gynecologists, I don't practice it, but some of the gynecologists, they do sex determination and like in 4 months, which is not legal in India. Sir, I want to ask, like you said, we have third type of, we have to become aware. I want to ask actually, the people who are doing, the patients who are doing sex determination, they are doing bad karma. Then the doctors who are detecting it, again, they are doing bad karma. And then they want abortion of that child, that is also a bad karma. And the doctors who are doing it, somebody has to do it. So those doctors who are tackling this type of patients are in third type of karma or bad karma. Matlab, I hope you have understood my question, sir, or I'll ask, sir. No, the first time you asked itself is a little confusing. I don't want you to confuse again. So what is the third type of karma? Sir, you said those people, they don't do good karma, they don't do bad karma. The third karma, the third type is, we have to be aware. Somebody has to do that type of karma, no, sir? Not good, not bad.
The third type. Really? Did I say that? Sir, you said like those people are great. Like those people do those. Somebody has to do those. Sir, That means beyond karma. means those people are aware. Means साक्षी type से वो लोग देखते रहते हैं. तो हाँ वो beyond karma मतलब चले जाते हैं. भगवान उनसे कराता है. हाँ. मतलब those doctors who are doing that type of karma and tackling those type of patients they are in that type. I'm speaking about an enlightened category. Okay, so that is not a third type of karma that goes beyond karma. Okay, and only enlightened masters are able to be in that space. It doesn't apply third category doctors and all the things. First of all, you need to understand that you have to follow the law of the land. And if you are not following the law of the land, you have to face the consequences. Karma is nothing but cause and effect. So for every action, there is a consequence. So if somebody is not following the law, they have to face the law. They have to face the consequences of the law, of misusing the law, of not following the law. So you cannot categorize. There is a subject, there is a law and order. This is a very deep subject. So let me explain. Aram se, shan se baithiye. Relax your shoulders. You sit back, relax your shoulders, and don't try to jump on me. Okay, just relax. You will understand. Okay, so the first is, you asked a question about the doctors determining the sex, which is illegal, and the patients requesting them to do it, or probably they are bribing the doctors, which is also illegal. So they both are not doing good actions because that goes against the law. And the doctors cannot say, I'm helpless, what can I do? The doctors has to follow the law. Okay, so you cannot feel helpless just because somebody is requesting you. You have to follow the law. As simple as that. If you don't follow the law, you face the consequences. So it doesn't come under your personal karmic law. Yes. Now coming to the second category. The second category is, if the parents request the doctor to do the abortion, right? So every mother who is pregnant has a free will to do abortion because the mother is not ready. So the mother has the free will. Like if the soul, if the incoming soul also has a free will, sometimes the incoming soul chooses not to incarnate. It comes to the mother's womb and then it decides, no, I will come again. So the incoming soul also goes back. So that is called miscarriage. Sometimes the miscarriage happens. So that is the free will, that is the free choice of the soul of the baby. So abortion is the free choice of the mother. But whether you have to do abortion or not, as a doctor, you have to follow the law. And if the law permits, you can do it. Okay. Wait. Yes, I will unmute you. Yes. So a complicated case of this type comes to us. No. First of all, did you understood the ABCD of what I'm saying? First of all, yes. There is no third category of karma. There is no third category of karma. The third category is the one who is enlightened, the one who goes beyond the karma. He is into witnessing consciousness. Okay, so that doesn't apply to normal people. That is only for the enlightened people. That point, you got it clear. And the second point is you have to follow the law. And the third point is, if the law permits, the mother is free to do abortion. The mother has the free will to do abortion. And if the law permits, the doctor also has the free will to help the abortion process. Very simple. Yes, sir. So actually what happens in villages, the homeopathic doctors, and they all do criminal abortions. And those complicated patients, suppose we know the procedure and we can help those patients by saving their lives. So that already they have done criminal abortion. Saving those patients, is this legal? What I want to say is this in a spirituality point of view, this is okay? Is this okay? There is something called, is it something called vritti dharma?
Okay, dharma of your work. Dharma means duty. Okay, so you follow the duty of your profession. Whatever you are called for, according to the profession you are, go for it. Yes. Thank you, sir. Okay. Good. Next. Harshana. So you can unmute and speak. Hello, sir. In Yes. your previous class, you have told we need not worry about our thought or our actions are dependent on our gunas. We should be more considerate about our words. So I want to know, so whatever the negative thoughts we get, can we leave it off just like that? Won't those influence in our words and actions? No, when I said the man is made of field, I expressed the man is made up of the field of feelings, emotions, thoughts as bhavana kshetra. And then there is vak kshetra, right? And then there is karya kshetra. The field of thoughts, feelings is one field, and there is a field of words, vak kshetra, how do you speak? And then there is a field of action. There are three fields together describe a man. Everybody is described based on these three fields. So the feelings are your choice. The bhavanas, the feelings, the thoughts are your choice. Nobody is questioning you. Nobody is going to question you. No policeman is going to come and question you. Why did you think bad about your neighbor? But we know no. No, but as per the law, in the general surroundings, you are free to think whatever you want to think. In the higher worlds, they won't ask you. When you go to the higher worlds, they won't ask you. Okay, for example, I'm just giving an example. You might be a married woman, but you might like another man. Just your thought, you might like another man. That's okay. That is your feeling. There's no problem in it. There's nothing wrong in it. But when you act upon your thought, then it becomes a problem. Okay. So as such, the thoughts have no problem. So you are not responsible to anybody for your thoughts. Okay. And your actions are based on your gunas. The only space where you have to take responsibility, is your words, your vakshetra. Okay, so that's it. And now you asked about a question about the thought power. That is altogether another topic. Okay, so how to manifest? We are all energy beings. We are all thought beings. Okay, we are all thinking beings. We are conscious beings. We are all knowledge, wisdom beings. So we are knowledge, energy, wisdom. All three together is what is we. Okay, so if somebody asks you, what are you? You have to say, I'm a soul. Can you describe the soul? What is the soul? Can you describe the soul? Then you say, soul is nothing but energy / knowledge / wisdom. So knowledge, energy, wisdom. Now, what is a thought? A thought is the function of your consciousness. A thought is the expression of your consciousness. And this is called sankalpa. Thought means sankalpa, intent. There is this great spiritual law, intent and its effect, manifestation. So as your thought is, so are you. As your intent is, so is your manifestation. And again, the subject goes very deep. This is a beautiful subject, the power of thought. So using the power of thought, how you mold your life. Your life, the way you live your life is based on your thought, is based on the thoughts are generated from the mind. So as your mind is, so is your life. So this topic of the power of the thought describes about your life, your current status of life. Okay, so this is altogether a new subject. Maybe since you asked this question, I will
share this topic now. Maybe Neetaji, you can translate. So far, whatever I described, I will start the topic, power of thought. Yes, sir. तो Which is nothing but Sankalpa Shakti. Yes, sir. तो फ्रेंड्स, शीतल जी ने पूछा था कि आपने 2 कर्मा के बारे में बताया था, अच्छा कर्मा और बुरा कर्मा। एक और भी कर्मा के बारे में बताया था जो हम साक्षी भाव में करते हैं, तो क्या वो डॉक्टर्स लोगों के लिए वो अप्लाइबल हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं? तो सर ने कहा कि जो बियॉन्ड कर्मा के बारे में मैं तुम लोगों को बता रहा था, जो कर्मा के पार की बात है, वो एनलाइटेड मास्टर्स लोगों के लिए, वो सामान्य लोगों के लिए नहीं है। क्योंकि जब वो आदमी एनलाइटेड हो जाएगा, जो आत्मा एनलाइटेड हो जाएगी, वो कर्म जो भी करेगी वो किसी और के मतलब साक्षी भाव में करेगी, ये आम आदमी के लिए नहीं है। हमको जो सामान्य लोग हैं उनको हमारे भूमि के जितने भी नियम हैं उनको उनका पालन करना चाहिए। एक मिनट, उनका पालन करना चाहिए, क्योंकि हमको उनके जो भी हम कर रहे हैं उसके परिणाम मिलेंगे। ये कार्य और कारण का सिद्धांत है, परिणाम हमको फेस करना ही पड़ेगा, चाहे इसको यूज करो, मिसयूज करे, तभी भी हम कोई भी कार्य को। तो जब वो डॉक्टर के लिए पूछ रही थी कि वो क्वेश्चन था उनका भ्रूण के लिंग का पता लगाने का, अभी ये बैन कर दिया है हमारी गवर्नमेंट ने, पर अभी भी कई लोग कराते हैं, भ्रूण का लिंग पता करते हैं, और अगर लड़की होती है तो अबॉर्ट करा देते हैं। तो उन्होंने प्रदीप सर ने कहा कि ये दोनों के लिए इलीगल है। अगर वो डॉक्टर बता रहा है तभी भी वो इलीगल है, क्योंकि वो कोई हेल्पलेस नहीं है कि उसे बताना जरूरी है, उसे नहीं बताना चाहिए। और दूसरा, अगर कोई अबॉर्शन करा रहा है सुन के, तब भी वो कर्मा है, क्योंकि मदर के पास फ्री विल है कि वो अबॉर्शन कराए या न कराए। कभी कभी बच्चे भी इस फ्री विल को यूज करते हैं और बर्थ लेने के लिए मना कर देते हैं। हो सकता है वो सोल तैयार नहीं हो या भ्रूण का विकास ठीक तरीके से नहीं हुआ हो, तो वो सोल जो टर्मिनेट करना चाहती है अपने प्लान को, वो मिस कैरेज के रूप में चली जाती है वापस। पर अबॉर्शन कॉन्शियसली माँ का फ्री विल है, और अगर आपको लगता है कि आपका नियम इसको परमिट कर रहा है तो आप कर सकते हैं। यदि एक डॉक्टर को लग रहा है कि ये नियम, क्योंकि कुछ कॉम्प्लिकेशंस वगैरह भी होते होंगे, तो अगर डॉक्टर को कभी ये नियम परमिट कर रहा है कि अबॉर्शन जरूरी है तो ही करे, नहीं तो ये बैड कर्म के रूप में ही आएंगे। फिर उन्होंने पूछा था कि गांव में कई बार कुछ क्रिमिनल को शायद रेप वगैरह के से रिलेटेड वो पूछ रही थी कि कभी कभी इलीगल तरीके से प्रेग्नेंट हो जाती हैं जब विमेन, और बहुत जरूरी हो जाता है अबॉर्शन करना, तब क्या किया जाए? तब क्या डॉक्टर अबॉर्शन करता है, तब वो क्या कर्मा के जाल में फंसता है? तो सर ने कहा कि धर्मा का अर्थ होता है ड्यूटी, इसे वृत्ति धर्मा कहते हैं। अगर प्रोफेशन के अनुसार आपको जो धर्म करना रहता है उसके बारे में है ये। तो अगर आपका धर्म अलाउ कर रहा है, आपका ये प्रोफेशन अलाउ कर रहा है कि वहां पर अबॉर्शन करना जरूरी है, तब आप कर सकते हैं, नहीं तो ये बैड कर्मा के रूप में ही आएगा। फिर हर्षना जी ने पूछा है कि हमारे गुना थॉट और वर्ड्स पर निर्भर रहते हैं, तो मैं सेकंड पार्ट नहीं सुन पाई थी, मैं पूछूंगी उनसे। तो सर ने आंसर दिया था कि हमारे सारे गुना, जो रजोगुना, तमोगुना और सात्विक गुना के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो वो जो भी गुना है वो किसी भी व्यक्ति के फील, जो उसकी इमोशन है, उसकी जो फीलिंग है और जो भावना क्षेत्र है उस पर डिपेंड करता है। और भावना क्षेत्र क्या है? फीलिंग का। वाक क्षेत्र मतलब वर्ड्स का, और दूसरा कार्य क्षेत्र जिसको हम एक्शन के रूप में दिखाते हैं। तो किसी भी व्यक्ति की भावना और थॉट उसका निजी मामला रहता है, चाहे वो कुछ भी सोचे, उसका कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। पर अगर आप पृथ्वी पर रह रहे हैं तो आप जो भी एक्शन करते हैं उसके लिए लॉ बने हुए हैं। जैसे कि किसी आदमी को, किसी औरत को किसी दूसरे पर पुरुष के प्रति आकर्षण होता है और वो उसके बारे में कोई गलत सोचती है, तो ये कोई नियम के विरुद्ध नहीं जा रही है, कोई भी उसके ऊपर कानून नहीं लगेगा। पर यदि कोई वो गलत काम कर रही है तब उसके ऊपर एक्शन, कानून लगता है। तो हमारे एक्शंस हमारे गुना पर निर्भर होते हैं, और हमारे एक्शन वाक क्षेत्र पर निर्भर होते हैं, और हम उसको कैसे मैनिफेस्ट करें। हम सभी लोग कॉन्शियस बीइंग है, नॉलेज बीइंग है, विजडम बीइंग है, थॉट बीइंग है।
अगर कॉन्शियसनेस को आप परिभाषित करना चाहेंगे तो आप कहेंगे कि हम एनर्जी, कॉन्शियसनेस एंड विजडम, इससे ही मिलके हमारी सोल है। तो थॉट आपके कॉन्शियसनेस का एक्सप्रेशन है, जिसे हम इंटेंट कहते हैं। इंटेंट अर्थात मैनिफेस्टेशन। जैसे आपका संकल्प होगा वैसे ही आप बन जाते हैं। क्योंकि ये बहुत डीप सब्जेक्ट है और संकल्प शक्ति पूरे थॉट पर निर्भर है, और आपकी जो वर्तमान जीवन है वो आपकी पूरे संकल्प शक्ति का कुल योग है। तो अब सर संकल्प शक्ति के बारे में ही चर्चा करेंगे। थैंक यू सर। Okay, so her question was, if you think negative, are we not going to face the consequences? So that was her question. You will definitely face the consequences, but your thoughts are your free will. Nobody is going to question you. You are not responsible. You can think whatever you want, but the effects, of course, you have to face. But you have the freedom to feel what you want, to think what you want. So nobody will question you in the higher worlds. That doesn't add, the thoughts itself doesn't add to the karma, but the thoughts which leads to the actions leads to the karma. So I gave you an example. I'll give you an example. I think the last time also I give an example. Maybe I'll give another interesting example. Okay. So for example, a man, he is a very nice man and he's in a loving family. But he was on travel trips. He goes to different places. That is his job, marketing job. So only few days he is with the family. The rest of the days he is all by himself. So everybody has the sexual hormones. So this man was having a lot of sexual urge. So he decides to go to a prostitute house to fulfill his sexual desires. So he thinks, he feels that he needs to go. He goes there, but after going there, his consciousness doesn't permit. He says, no, yeah, I cannot do this to my wife. And he comes back. So there is no karma for him. He has the feeling, he has the sexual feeling, he has the sexual desire to go to another woman. There's nothing wrong in it. The feeling as such is nothing wrong. But he didn't act upon it. So that doesn't add any bad karma to him. Suppose he has acted upon it, then it's a bad karma to him. Then he is answerable. Your fantasies, your feelings, your desires are your choice. You are not answerable to anybody. But based on that fantasies and based on that thoughts and feelings you act upon, then you are answerable. Okay, so that is Bhavana Kshetra. Okay, but your feelings sometimes can be, you have that feeling, you are helpless, you feel sexual. I'm just giving an example. If you feel sexual, who is to be blamed about it? Who can you blame? That is the nature of your body. So you cannot feel guilty for having those feelings. That is just a Bhavana Kshetra. That is just a feeling. Field of. Kshetra means field. That's the field of feelings and thoughts. So you're not responsible for anybody. You understand? So you don't need to feel guilty about it. But sankalpas, thoughts, are different. You understand the difference? Feelings, bhavanas, thoughts, they are different. Okay? Yes, you have to be careful about your thought power. Or in other words, you have to be careful about your thought patterns. You just get a thought, for a flick of a second, you get a thought and it goes away. That's fine. But if you're having a thought pattern, yes, that impacts your life. We will discuss this thought pattern is from the man. This thought pattern, what we call as a thought pattern, determines your life.
Okay. So I think I'm clarifying your previous question. You're clear with that? I'm just giving a clarification to the previous question. So now let us get into a wonderful topic, the most important theme, you can call it as a theme, the most important theme of the human life, or the most important science in spirituality. That is the thought power, the Sankalpa Shakti. Okay, I want everybody to write it down. It's very important. Everybody take a pen and paper and write it down. I think you got used to simply listening, right? You ready? Yes. Fundamentally, we are thought beings. Who are we? Describe we. We want to describe. So fundamentally means basically, fundamentally, we are thought beings / thinking beings. And we are also energy beings. And we are also knowledge beings. So we are all a speck. We are all a speck of consciousness and knowledge. We are a speck of consciousness and knowledge. That is our description. That is what we are as energy, as pure energy. Now, this consciousness expresses through thoughts. Your consciousness is expressed through your thoughts, expressed as thoughts. Your consciousness functions as thoughts. We are thinking beings constantly responding to the situation. When we are living a life on the planet Earth, we are constantly responding to the situations, trying to work on the situation and trying to change the situation. In our environment, in our surroundings, we are constantly working with our thoughts. And everything is dynamic. In life, everything is dynamic. Our life is dynamic. Every moment it is dynamic. And everything depends upon knowledge, energy, and your thought quality. At any given point of time, everything is dynamic in life. And everything depends upon your energy, your knowledge, and your thought quality. This is the case with every person, of any being. These three determines energy, knowledge, and the quality of the thought. These three factors determines how you are working with your environment, how you are facing your environment, how you are trying to change your environment. So this is how it is, dynamic flow of these three aspects. You have to understand this law of intent and effect. The law of intent and effect. As your intent is, so is your effect. As your intent is, so is your effect. Effect on whom? Effect on the environment. Effect on the surroundings. And what is intent? Intent is nothing but what you think in your mind. What you think in your mind is nothing but your intent.
what you conclude in your mind, what you summarize and what you conclude in your mind is nothing but your intent. So your thinking in your mind and your conclusions in your mind becomes your intent. And the effect is on the environment. Environment means the field of manifestation. As you think, so you become. This is a very, very important law. We create our own realities. We create our own realities based on our thought pattern. Probably many people would have heard, we create our own reality. But that is only a short statement. We create our own reality. How? Based on our thought patterns. So that is the complete statement. We create our own reality based on our thought patterns. Okay. For example, I'll give you an example. You saw the Olympic, the women's Olympic hockey, right? So when you see the game, you feel, wow, such a beautiful game. You see the game and you appreciate the game. And when you appreciate the game, when you see and when you appreciate the game, then there is a desire. So that seeing, that appreciation is the first step. That leads to the desire. Your desire, yes, I also want to play like that. I also want to be a great player like that. So that leads to your desires. And your desire is captured by your thought pattern. Or it's the other way. Your thought pattern is captured by the desire. So the first is you see and you appreciate, and that leads to the desires, and that leads to the thought patterns. So you start thinking, I have to, because of the desire, your thought pattern starts into dynamic flow. Your thought pattern starts moving, your thinking thought pattern starts moving. Yes, I want to be a great player like that. So your thought pattern, which was outcome of your desire, leads to you making efforts. Okay, where do I learn this hockey game? Who is the right teacher for me? Who can teach me this game? And what is the knowledge I should gather? So you start studying about the game, the rules of the game, and how to prepare. So you acquire knowledge. So you find the teacher and you learn from the teacher, and you practice the game, and finally you will become a great hockey player. So that is the final outcome. See, your thought pattern helps you to manifest what you want. Everything arises from the mind. Everything arises from the mind. And manifestation is the outer, thought is inner. Your inner leads to the outer. Your thoughts are in the mind, but the result is the manifestation of your thoughts in the outer field, in the physical field, in your environment. If you are wavering, for example, if you are having thoughts, wavering thoughts, your thoughts are not continuous, your thoughts are not steady. For example, you watch the game hockey player and you want to be a great hockey player.
But tomorrow, your thoughts are, okay, I don't know if I really want to be a hockey player. So your thoughts are hanky-panky. It's not continuous. It's wavering. Then you cannot manifest anything. Then there is a greater confusion in life. Life leads to a greater confusion. So your thoughts, what should be the quality of thoughts? If you want to manifest anything, what should be the quality of your thought? The quality of your thought should be continuous, crystal clear. Your thoughts should be crystal clear thoughts. And that crystal clear clarity should be there continuously until you manifest. That is the way to achieve anything in life, to manifest anything in life. And you have the free will to manifest something, or you have the free will to discontinue your thoughts. You have the free will. If at any point of time you can give up whatever is your dreams, many people, they give up their dreams in the middle. Not everybody becomes an Olympic champion in the hockey. Many people, they give up, they start the game, but they give up the game in the middle because of this discontinuous thoughts. And it all depends. It depends on how much desire you have, because your thoughts are the result of your desire. How strong is your desire? If your desire is really, really strong, then your thoughts, the energy of your thought will be strong and continuous. So it depends on the desire, and it depends on the knowledge you have. Remember when we discussed about Confucius, if you want sincerity, then you should work on acquiring knowledge. You should start investigating the things. The more and more knowledge makes you sincere. If you don't have much knowledge about it, sooner or later you will discontinue it. But if you have a very strong desire, you have a very deep desire, and you have a good knowledge about it, you gather, you study, you do your homework, you acquire knowledge, then the thoughts become powerful. And the third point, I'm giving you 3 points. If you want to make your thoughts more powerful, if you want to achieve anything you want, then the first point is the desire should be very, very strong desire. So the second point is you should have sufficient knowledge about it. And the third point is you should not have fear. If you have fear, then your thoughts become weaker. The power of your thought becomes weak if you have fear. So a person who has fear, his thoughts are very weak and he cannot manifest anything he wants. So these are the 3 important aspects. The first is you should have a strong desire, and you should have sufficient knowledge, and then you should be fearless. Then your thoughts are powerful thoughts, and you will manifest anything you want. Not only physical, you want to become somebody, that is also a thought. For example, you want to become like a Buddha. Okay, you read the life story of Buddha, and then you have this desire. Yes, I have to be like him. I have to have that kind of a life. You appreciate Buddha. You appreciate the teachings of Buddha. You are fascinated with Buddha. Then you have the desire. I want to be like Buddha. I want to live that kind of an enlightened life. So that is the desire. And that desire produces the thought patterns. In your mind, the mind is radiating that thought. Yes, I want to be like Buddha. I want to be like Buddha. And that thought gives way
to do the right things, acquire. Yes, how do I do it? Where do I find the right teacher to teach me meditation? What are the things I need to do? What books I need to read? How can I acquire Gyan, knowledge? And what should I do? What to become a Buddha? So you will work on it, you will make efforts. So that thought helps you to make efforts. And through that sincerity and through that efforts, you will definitely become a Buddha. So your thought to become a Buddha will manifest for you to become a Buddha. If your desire is really sincere, if your desire is really strong. As a child, when I was around 3 years old, I had a very strong desire that I want to know myself. I want to know what is life. I want to know where did I come from. I want to know what is death. I want to know where will I go after death. What happens after death? Very strong desire. So that strong desire helped me to manifest. If I'm in front of you, teaching you, that is because of my thought, that is because of my desire, sincere desire, very deep desire. So everybody and anybody can achieve, can manifest, can become whatever you want, depending on the power of your thought, depending on your sankalpa shakti. This is a great science, my dear friends. This is the law of intent and the effect. If your intent is to become a Buddha, the effect will be you will become a Buddha. So, fear plays an important role in the power of thought. Your fear, the energy of fear, diminishes the power of thought. So, a decisive thinking is very, very need of the hour. Decisive thinking, not simply thinking. Your thought should not be a simple thought, it should be decisive. What is decisive? Decisive means you are very clear, you are crystal clear what you want and what you do. You are absolutely clear about it. And there is no hanky-pankiness. And there is no one step going forward, 2 steps going backwards. That is not decisive thinking. Decisive thinking means you are always going forward. You are on the war footing until you get what you want. That is decisive thinking. Okay. And fundamentally, we have 4 kinds of thought patterns. There are 4 kinds of thought patterns. And before I go into that in detail, I want Neetaji to translate just this. This is a very deep subject. I want you to pay very close attention. सर पहले ही आंसर जो हर्षना का आंसर था उसी को थोड़ा कंटिन्यू किए थे कि अगर नेगेटिव थॉट है आपके पास तो आपसे कोई पूछेगा नहीं पर आपको उसके परिणाम जरूर भुगतने पड़ेंगे। एग्जाम्पल देते हुए कहा था कि यदि कोई व्यक्ति अपने परिवार को बहुत प्यार करता है पर वो किसी कारणवश अपने बिजनेस के, क्योंकि वो मार्केटिंग में है इसलिए अक्सर उसको घर से बाहर जाना पड़ता है, तो कभी हो सकता है कि उसमें एक सेक्सुअल अर्ज आ जाए कि और अगर वो अपने घर में नहीं है तो सेक्सुअल अर्ज के कारण हो सकता है कि वो प्रोस्टिट्यूट के घर तक के भी पहुंच जाए और वहां पर पहुंचने के बाद उसे लगे कि ये गलत काम है और वो वापस आ जाता है। उसने फील जरूर किया एक सेक्सुअल डिजायर की पर उसने कोई भी कर्म नहीं किया, तो उसमें कोई भी कर्म का बंधन नहीं लगेगा, जबकि उसने फील किया था। तो वो फीलिंग थी पर एक्ट नहीं हुआ तो ये कुछ भी कर्म नहीं हुआ। अगर वो उस सेक्सुअल एक्ट को कर लेता तब उसका कोई कर्म होता। तो आपकी फैंटेसी और आपकी डिजायर्स कोई भी मायने नहीं रखती, मतलब अगर एक्शन नहीं किया जाए तो कोई भी मायने नहीं रखती, वो सिर्फ एक भावना क्षेत्र में ही रहती है।
क्योंकि वो उसके में जो उस आदमी में जो फीलिंग आई थी वो हेल्पलेस हो गया था, क्योंकि ये जो सेक्सुअल एनर्जी थी वो नेचर की, जो प्रकृति के द्वारा दी गई है, जो शरीर में हमारे रहती है। तो भावना क्षेत्र हमारा वो होता है जो फील्ड ऑफ थॉट एंड फीलिंग होता है। पर इसके अलावा संकल्प या अपने थॉट्स हमारे बिल्कुल अलग होते हैं, बहुत पावरफुल रहते हैं। और आप लोग बहुत सतर्क रहिए, क्योंकि आपके थॉट पैटर्न आपके जीवन को बनाते हैं। अगर एक सेकंड के लिए कोई विचार आता है, बुरा भी कोई आता है जाता है, तो उससे आपकी जिंदगी में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, परंतु जो थॉट पैटर्न आपका चला आता है वो निर्धारित करता है आपके जीवन को। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थीम है अपनी जिंदगी की, ये स्पिरिचुअलिटी में साइंस है, संकल्प शक्ति। तो मौलिक रूप से हम सभी लोग थॉट बीइंग है, थिंकिंग बीइंग है, एनर्जी बीइंग है, नॉलेज बीइंग है। हम सभी लोग चेतना से बने हुए हैं। हमारी चेतना एक्सप्रेस करती है हमारे विचारों के द्वारा। हमारी चेतना फंक्शन मतलब कार्य करती है हमारे विचारों के द्वारा। लगातार हम जो भी जीवन जी रहे हैं उसके आसपास के वातावरण को हम रिस्पॉन्ड करते रहते हैं, और वातावरण में या परिस्थितियों में हम चेंज भी करते रहते हैं। जीवन गतिशील है, और हमारा जो जीवन का जो डायनेमिक्स है, जो गतिशीलता है, वो निर्भर करती है हमारी नॉलेज, हमारी एनर्जी और हमारे थॉट की क्वालिटी पर। हर चीज गतिशील है, और यही हर चीज डिपेंड करती है नॉलेज, एनर्जी एंड थॉट क्वालिटी पर, और ये सभी प्रत्येक आदमी के लिए लागू होता है। Nitya ji, if I can interrupt, sorry to interrupt. I just saw the time because I have the Vietnam session starting in. Oh, yes, sir. You told me, no? So, sir, I will continue after that. So tomorrow also we are logging in. So tomorrow I'll continue this topic, and fundamentally there are 4 kinds of thought patterns. Yes, you can complete that. So basically there are 4 kinds of thought patterns: Yes, sir. disastrous thought pattern, negative thought pattern, positive thought pattern, and miraculous thought pattern. So your disastrous thought pattern comes from your disastrous mind, and negative thought pattern comes from your negative mind. So, and similarly, miraculous thought pattern comes from your miraculous mind. So the mind has to be rectified. If you want to change the outcome of, if you want to live a beautiful life, then the thought patterns has to be corrected. If you have the right thought pattern, you will have the right manifestation. This is Sankalpa Shakti. Okay. And basically, there are 3 kinds of patterns. Okay. So you can write down. There are 3 kinds of patterns. So the first is the thought pattern. So the second is the decision pattern. The decision you take, the decisiveness you take, that has a pattern. So the first is the thought pattern. The second is the decision pattern. So no hanky-panky. You are always going forward. No 1 step backward, no 1 step forward, 2 steps. 1 step forward, 2 steps backward. You are not doing that. Your decision pattern, that is a pattern. And the third is your desire pattern. Your desire has to be consistent. So these are the 3 patterns you should remember. First is your thought pattern. Second is your decisiveness pattern. And the third is your desire pattern. These 3 patterns leads to success. These 3 patterns, if leads to success of any human, of any venture, of any project, these 3 are the ingredients of success. Okay, this is the secret of manifestation. Many people have questions about manifestation. Manifestation. What is this manifestation? This is manifestation. When you have these 3 patterns correct, and you can manifest anything you want. You become a co-creator. You become successful. Okay. And coming to the thought patterns, again, there are 4 categories: disastrous, negative, positive,
and miraculous. So it is there in the PSSM. About these 4 points, it is there in the PSSM concept also. So Neetaji will explain that. Yes. I think Harshana has asked a beautiful question. Yes. So the subject has come. All right, friends. So I need to leave now. So we'll see you tomorrow again. So like this, if you ask wonderful questions, wonderful subject will come. So you create your own reality. Depending on the questions you ask, you get that kind of answers. We all create our own realities. This is another example. Okay. You have to underline the statement. This is a very, very important law. We create our own realities based on our own thought patterns, based on our own desire patterns, based on our own decisive pattern. This is how we create our own reality. Okay. Okay, friends. So we'll see you tomorrow. सब लोगों का धन्यवाद. Namaskar. Thank you, sir. Thank you. हम लोग कहाँ थे माही? तो यहाँ पर हमारा जीवन और हर चीज गतिशील रहता है, डायनेमिक है, हमारे नॉलेज, एनर्जी और थॉट की क्वालिटी पर। और हमारा जैसा संकल्प होगा वैसे ही उसका प्रभाव होगा, और हमारा प्रभाव सिर्फ हमारे पर ही नहीं, हमारे आसपास के लोगों और वातावरण पर भी पड़ता है। तो इंटेंट क्या है? जो भी हम मन में सोचते हैं वो इंटेंट है। जो भी मन निर्णय ले लेता है, कंक्लूड कर लेता है, उसको हम इंटेंट कहते हैं। और जैसे हम सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं, इसे ही मैनिफेस्टेशन कहते हैं। वी क्रिएट अवर ओन रियलिटी बेस्ड ऑन अवर ओन थॉट्स, अर्थात हम अपनी वास्तविकता का सृजन करते हैं जो हमारी विचारों पर निर्भर करता है, विचार धारा पे, थॉट पैटर्न पे निर्भर करता है। जैसे यदि मान लो आपने किसी विमेन को ओलंपिक में खेलते हुए देखा फुटबॉल, और आपके मन में इच्छा हुई, नहीं, जब आप उसको देखते हो कि ये बहुत ही प्यारा गेम है और उसकी प्रशंसा करते हो, तब आपके मन में एक इच्छा होती है, देखकर और प्रशंसा करने के बाद आपको एक इच्छा होती है कि काश मैं भी ऐसी अच्छी फुटबॉल प्लेयर बनूं। तो ये जो डिजायर है वो आपकी थॉट है। डिजायर मतलब आपका विचार, और ये विचार आपको उस तरफ ले जाएगा, मतलब आपके विचार उसी के आसपास घूमते रहेंगे, जहां पे भी हमारी इच्छा होती है उसके आसपास हमारे विचार घूमते रहते हैं। और उसके बाद आप एक पूरे समय सोचते रहेंगे कि मैं कैसे ऐसा प्लेयर बनूं। और ये थॉट हो सकता है कि आप प्रयास करें कि एक राइट टीचर को ढूंढूं जो आपको फुटबॉल सिखाए, फिर आप अपना नॉलेज इकट्ठा करने चले जाएंगे कि इस गेम के रूल क्या हैं। तो जितना ज्यादा आप नॉलेज इकट्ठा करते जाएंगे उतना ही ज्यादा आप समझते जाएंगे, और टीचर से भी आप सीखते जाएंगे, और उस खेल का आप अभ्यास भी करते जाएंगे। तो आपकी सिर्फ एक इच्छा ने और आपकी इच्छा शक्ति ने और आपकी मेहनत ने आपको एक हॉकी प्लेयर बना सकती है। तो आपका थॉट पैटर्न मैनिफेस्ट करता है जो भी आप बनना चाहें। मैनिफेस्टेशन आउटर होता है, मतलब सृजन बाहर होता है, विचार हमारे अंदर होते हैं। हमारे बाहर के क्षेत्र में हम क्रिएट करते हैं जो भी हम पाना चाहते हैं। अगर तुम सोचते रहते हो, मतलब हमारे अगर बिखरे हुए थॉट्स रहते हैं, हमारे एक सतत रूप से एक तरफ नहीं चलते हैं, तो ऐसे बिखरे हुए थॉट से हम कुछ भी नहीं बन पाएंगे। हमारा माइंड कंफ्यूजन स्टेट में रहेगा। तो हम अपने हमारे थॉट की क्वालिटी पे हमारा मैनिफेस्टेशन डिपेंड करता है। कैसा वाला? जो हमारे विचार सतत रूप से क्रिस्टल क्लियर हो, बिल्कुल पारदर्शी हो, आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखे कि आप क्या चाहते हैं। जब तक कि आपको खुद ही नहीं मालूम चलेगा कि आप क्या चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, तब तक के आप उस चीज को अचीव नहीं कर सकते। सभी के पास ये फ्री विल है कि मैनिफेस्टेशन करे या उसको छोड़ दे, क्योंकि कई बार कई लोग अपने सपने बुनते हैं
पर उसको बीच में ही छोड़ देते हैं। जैसे कई लोग चाहते हैं कि हम स्पोर्ट्स में बहुत बड़े प्लेयर बने, पर कुछ महीनों के बाद उस चीज को छोड़ देते हैं। वो क्यों होता है? क्योंकि वो अपने थॉट्स को, अपने संकल्प शक्ति को कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं। संकल्प शक्ति को बनाने के बाद भी हमें उसे पूरे समय पोषित करते रहना पड़ता है। तो पहला जो पॉइंट था हमारा, स्ट्रॉन्ग डिजायर होना चाहिए। दूसरा, हमारे पास नॉलेज होना चाहिए उस विषय में जिसमें हम कुछ पाना चाहते हैं। अब जो भी आपकी इच्छा है उसकी शक्ति निर्भर करती है आपके नॉलेज पर। हमने कन्फ्यूशियस में भी देखा था कि जब भी हम नॉलेज इकट्ठा करते हैं, तब जितना ज्यादा हम नॉलेज इकट्ठा करते जाते हैं उतने ज्यादा हम सिंसियर होते जाते हैं। जितने हम सिंसियर होते जाते हैं उतने हम सीरियस होते जाते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। तो नॉलेज नहीं होगा तो आप डिसकंटिन्यू कर देंगे, और इसीलिए कई लोग बीच में अपनी महत्वाकांक्षाओं को बीच में छोड़ देते हैं। तो डिजायर प्लस नॉलेज इज इक्वल टू थॉट हमारा पावरफुल हो जाता है। मतलब हमारा विचार बहुत शक्तिशाली हो जाता है जब हमारी इच्छा और हमारे को ज्ञान हो उस चीज में। और तीसरा पॉइंट सर ने कहा, फियरलेस। अगर आप डरते रहेंगे तो आपके थॉट, आपकी संकल्प शक्ति कमजोर हो जाएगी। तो आप कोई भी चीज मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो आपको अपने विचारों को शक्ति देना है, उसको मैनिफेस्ट करना है, तो आपको अपने मन में से डर को निकाल देना होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आप बुद्धा की टीचिंग को सुनते हैं और आप उनसे बहुत इंस्पायर हो जाते हैं और आपको लगता है कि आप प्रशंसा करते हैं और आप उनकी टीचिंग से फैसिनेट हो जाते हैं, तो आप भी चाहते हैं कि आप एक बुद्धा के समान जिंदगी को जिए, एक एनलाइटन हो जाए। तो आपके थॉट्स उस बुद्धा के टीचिंग्स और उसके बारे के आसपास में ही होगा। उससे आप अपने लिए सही रास्ता चुनेंगे, टीचर चुनेंगे, मेडिटेशन करेंगे, सही बुक्स पढ़ेंगे, ज्ञान इकट्ठा करेंगे और सोचेंगे कि मैं अपने एनलाइटन होने के लिए क्या करूं, क्या न करूं। तो आपकी सिंसियरिटी आपके एफर्ट को अग्रसर करती है, एफर्ट करने के लिए अग्रसर करती है, मतलब कोशिश करने के लिए अग्रसर करती है, और आप बुद्धा बन जाते हो। तो आपकी डिजायर भी सिंसियर होना चाहिए। प्रदीप सर ने कहा, जब मैं 2-3 साल का था तब मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और डेथ के बारे में मुझे काफी कुछ जिज्ञासा थी, और यही मेरी जो सिंसियर डिजायर थी उसी ने मुझे हेल्प किया इस चीज को मैनिफेस्ट करने के लिए कि आज मैं एक टीचर के रूप में आप लोगों को ज्ञान बांट रहा हूँ। तो सिंसियर डिजायर आप अगर रही तो आप हर चीज मैनिफेस्ट कर सकते हैं या हर वो बन सकते हैं जो आप बनना चाहते हैं। तो फियरलेस आपको होना चाहिए। अगर आपकी संकल्प शक्ति बुद्धा बनने में है तो आप बुद्धा बनोगे ही। बस इतना ही कहा था सर ने। और क्या कहा था? हाँ, फियर की एनर्जी थॉट को कमजोर कर देती है। आपके जो थॉट है वो बिल्कुल सोच समझ के निर्णय सही ढंग से लिया गया हो, तभी आप बिल्कुल कहते हैं ना, युद्ध स्तर पे उस काम के लिए जुट जाते हो। तभी आप युद्ध स्तर पे करोगे जब आपको बिल्कुल अपना उद्देश्य सब कुछ समझ में आएगा। हमारे जो भी मैनिफेस्टेशन है वो 3 चीजों पे डिपेंड करता है। काइंड्स ऑफ मतलब थॉट पैटर्न हमारे कैसे हैं, डिसिसिव पैटर्न कैसे हैं, और डिजायर पैटर्न कैसे हैं। तो डिजायर पैटर्न आपको मालूम है कि कौन सी आपकी इच्छा है और कौन सी आपकी उथली इच्छा है, कौन सी आपकी एक स्ट्रॉन्ग इच्छा है, दोनों में फर्क कर सकते हैं। डिसिसिव पैटर्न आपकी बिल्कुल एक ही तरफ बिखरे हुए नहीं रहने चाहिए आपके विचार। मतलब बिल्कुल आपको निर्णय ले लिया कि हाँ मुझे बनना है बुद्धा। बहुत सारे विचार हमारे पास आते हैं। मैं अपना भी एग्जांपल बताऊंगी आखिरी में, है ना। मैं क्योंकि अभी थोड़े दिनों पहले कंफ्यूशियस बोल के आई हूँ। तो आपको जब आप बिल्कुल डिसीजन ले लेते हैं कि मुझे यही बनना है, वो भी आपका पैटर्न डिपेंड करता है आपके मैनिफेस्टेशन में। और जो तीसरा थॉट पैटर्न बताए हैं, थिंकिंग पैटर्न, वो सब लोगों को मालूम है कि 4 टाइप के थिंकिंग पैटर्न होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, मिराकुलस और डिजास्टर्स। बताने की जरूरत है कि चारों आपको मालूम है? मालूम है आप लोग को चारों पैटर्न? कोई तो आंसर दो। फिर क्यों बोले? अगर सब मालूम है चारों तो फिर क्या बोलना है?
बिल्कुल, शिप्रा वर्मा बोलती है हमें मालूम है। तो अगर चारों पैटर्न, यस मैम, अरे सब इंटेलिजेंट है, देखो सब एनलाइटेड लोग बैठे हुए हमारे ग्रुप में, कोई भी नहीं है, एक नहीं बोला है। अच्छा, मैं एकदम शॉर्ट में बता दे रही हूँ। जो पत्री सर हमेशा अपने एग्जाम्पल के रूप में बताते हैं, वो एग्जाम्पल मुझे बहुत प्रिय है। कि समझ लीजिए मैंने न्यू कार खरीदा, नौसिखिया हूँ, बहुत अच्छा नहीं चलाती हूँ, समझ लीजिए मैंने कार खरीदा। अब मेरे पास चारों टाइप के पैटर्न के मैं यूज करूंगी, है ना। तो मैं कार पहली बार लेके आई हूँ, अब मुझे जाना है यहाँ से मरीन ड्राइव। मरीन ड्राइव मान लो आधे घंटे की दूरी पर है। तो यदि मैं नेगेटिव थिंकिंग वाली हूँ तो मैं हमेशा सोचूंगी कार ले जाने के पहले कि कहीं कुछ हो तो नहीं जाएगा, कहीं चोट तो नहीं लग जाएगी मुझे, या कुछ चालान तो नहीं ठुक जाएगा, कोई पुलिस तो नहीं पकड़ लेगा। ये नेगेटिव थिंकिंग है। तो जब मैं जाऊंगी तो जरूर मुझे चालान ठुक जाएगा, या कार को थोड़ा डैशबोर्ड वगैरह में टकरा जाएगा। ये नेगेटिव थिंकिंग से ही मैंने मैनिफेस्ट किया है। पर मैं वहां पर क्या सोचूंगी कि यहाँ का ट्रैफिक गंदा है, मेरे साथ तो किस्मत ऐसी ही है, मैं तो कोई भी नई चीज खरीदती हूँ तो लोगों की नजर लग जाती है। लोगों की नजर नहीं लगी है, आपने खुद मैनिफेस्ट किया है, क्योंकि आधे घंटे पहले ही आप सोच के गए थे कि आपकी कार कहीं टकरा ना जाए। तो ये नेगेटिव थिंकिंग है जिसको हम पूरे समय मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली। पर दोष हम हमेशा दूसरों पे लगाते हैं, अपने थिंकिंग पैटर्न की तरफ नहीं देखते हैं। एक है पॉजिटिव थिंकिंग कि मैं जाऊंगी और आधे घंटे में बिल्कुल मरीन ड्राइव से घूम के आ जाऊंगी, और वाकई होता भी है। मैं जाती हूँ और आधे घंटे में घूम के आ जाती हूँ, कार को कुछ भी नहीं होता, क्योंकि मैंने कोई मैनिफेस्ट करने के लिए कोई नेगेटिव थॉट किया ही नहीं, बस मुझे लगा कि मैं जा रही हूँ और घूम के आ जाऊंगी। तो ये पॉजिटिव थिंकिंग है, उसमें आदमी सफल होता है। जैसे एग्जाम में जा रहे हैं आप, बिल्कुल मैं तो मेरिट में आऊंगी, तो आप आएंगे ही। अगर मान लो आपके में एक डिसाइसिव थिंकिंग पैटर्न है कि अरे मैं गई और यहाँ पे तो बहुत ट्रैफिक रहता है, जरूर एक्सीडेंट हो जाएगा, और मैं तो कोई भी नई चीज लेती हूँ तो मेरे ऊपर लोगों की नजर लग जाती है, या जो भी हम अपने लिए बहुत कोई हानिकारक चीज सोचते हैं, तो हम वो डिसाइसिव थिंकिंग करते हैं। और बाकायदा मैं जाऊंगी और उस कार का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाएगा और परेशान हो जाऊंगी, तब भी मैं अपने थिंकिंग को ब्लेम नहीं दूंगी, अपने थिंकिंग के बारे में नहीं सोचूंगी। मैं सोचूंगी कि किसी सामने वाले ने, ट्रक वाले ने मेरी गाड़ी को ठोक दी, या लोगों की नजर लग गई, मतलब हम दूसरों पे दोष मढ़ देते हैं। पर वो हमारा डिसाइसिव थिंकिंग पैटर्न होता है जो हमको खुद ही बहुत बड़ा नुकसान दिलाता है। तो ये बहुत कॉमन इसलिए हो जाता है नेगेटिव पैटर्न और डिसाइसिव पैटर्न, क्योंकि पत्री सर कहते हैं कि हमारी जो परवरिश होती है वो हमेशा हमको फियरफुल तरीके से हमारे पेरेंट्स सिखाते हैं। तुम ये नहीं कर पाओगे, तुमसे नहीं होगा, तुम ऐसा मत करो, तुमको चोट लग जाएगी, तुम ऐसा मत करो, ट्रैफिक बहुत है। तो ये जो भी डिसाइसिव थिंकिंग है और नेगेटिव थिंकिंग है, वो हमारी परवरिश और हमारी सोसाइटी, हमारे आसपास के टीचर्स, फ्रेंड्स, सबके द्वारा आती है। एक जो चौथा पैटर्न है जो हम सभी मेडिटेटर्स लोग फॉलो करते हैं और करना भी चाहिए, उसको कहते हैं मिराकुलस थिंकिंग। जो आपके क्षमता है उसके भी बियॉन्ड आप अपने लिए सोचते हो। जैसे कि अगर मान लो मैंने कार लिया और मेरी मिराकुलस थिंकिंग है, तो मैं ये सोचूंगी कि ऐसे तो मुझे आधा घंटा लगता है मरीन ड्राइव में जाने में, पर आज मैं 15 मिनट में मैं घूम के आऊंगी, क्योंकि आज मुझे न ट्रैफिक मिलेगा न कुछ, एकदम फटाफट जाऊंगी और मैं घूम के आऊंगी हवा से बातें करते हुए। और ऐसा ही होगा। तो ऐसा नहीं था कि वो ट्रैफिक मेरे लिए रुक गया था, या ईश्वर बैठ के मेरे लिए ट्रैफिक रुका था कि रोड खाली मिले तो नीता घूमने जाए। वो मेरी मिराकुलस थिंकिंग थी जो मैंने मैनिफेस्ट किया। हमेशा आप कभी पार्क मॉल में जाते हैं, वहां पे आपको पार्किंग की जगह नहीं मिलती है, तो आप मिरेकलस थिंकिंग करके देखिएगा कि आज मुझे उस मॉल में यहाँ पर पार्किंग में मिल जाएगी, फर्स्ट फ्लोर पे ही, तो आपको मिल जाएगी। आपने बिल्कुल जो इम्पॉसिबल चीज है उसको भी आपने क्रिएट करने की हिम्मत की, सोचा, तो वो हमारा मिरेकलस थिंकिंग पैटर्न होता है। पत्री सर कहते हैं कि जब भी हम ढुलमुल, मतलब वही वेवरिंग वाला कि होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, हम जब भी करते हैं वो हमारा नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न होता है, यस और नो, दिस और दैट, तब हमारा नेगेटिव होता है। और जब कभी भी हम कहते हैं इम्पॉसिबल वर्ड, नहीं, जब हम कहते हैं कि बहुत कठिन है ये काम,
या दिस और दैट, तब हम नेगेटिव थिंकिंग करते हैं। पर जब हम वर्ड यूज करते हैं इम्पॉसिबल, तब वो हमारा डिजास्टर्स होता है। आप अगर एग्जामिनेशन हॉल में जा रहे हैं, आप बहुत अच्छे से नहीं पढ़ाई कर रहे हैं, पर इतना कर लिए हैं कि आप पास हो सकते हैं, पर आप सोचेंगे कि नहीं मेरे से तो बिल्कुल नहीं बनेगा, मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं, मैं बिल्कुल याद नहीं कर पा रही हूँ कि मैं क्या पढ़ रही हूँ, मैं तो फेल होंगी, मुझे तो लग रहा है कि मुझे सप्लीमेंट्री आएगी। आपने खुद अपने लिए डिजास्टर्स थिंकिंग किया, वहां जाएंगे, पेपर मिलेगा, वही क्वेश्चन आएंगे जो आप जानते हैं, पर आप नहीं बना पाएंगे क्योंकि आपकी थिंकिंग पैटर्न, आपकी मेमोरी पावर के ऊपर ओवरलैप हो जाएगी और आप लिख नहीं पाएंगे। तो ये वहां पर फिर जाके फेल हो जाएंगे। सप्लीमेंट्री आएगी, मुझे नहीं आई थी, किसी कभी भी, मैं एक बात बता रही हूँ, किसी को आएगी, तो वो ऐसा पैटर्न है। तो कभी भी इम्पॉसिबल वर्ड नहीं बोलते हैं, पत्री सर कहते हैं। और होगा कि नहीं होगा, कभी नहीं, हमेशा आप कहिए होगा, हमेशा पॉजिटिव रहिए। अगर मिरेकुलस नहीं कर सकते हैं सर कहते हैं तो मत करो। अगर आपको अपने ऊपर डाउट हो रहा है थोड़ा बहुत, तो मिरेकुलस मत करो, पर पॉजिटिव करो, तो सोचो और पॉजिटिव बोलो। तो कितनी भी अच्छे से तैयारी नहीं करके रखे हो तो भी आप सोचिए कि आप अच्छे मार्क्स से पास हो जाएंगे, तो होंगे ही। तो ये 4 टाइप के थिंकिंग पैटर्न्स होते हैं। तो क्या बताया, थिंकिंग पैटर्न हमारे थॉट पैटर्न्स, हमारे डिसिसिव पैटर्न और हमारे डिजायर पैटर्न हमारे मैनिफेस्टेशन को डिसाइड करते हैं। ये सीक्रेट है हमारे मैनिफेस्टेशन के। अगर हमारे ये तीनों सही रहेंगे तो जो भी चीज आप पाना चाहते हैं आप वो पा लेंगे, आप को क्रिएटर बन जाएंगे, आप सफल बन जाएंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो चलिए फ्रेंड्स,